दोस्तों, my young friends, आप सब कैसे हैं? आप fighting fit हैं? You, the youth, must be posting similar status messages on your FB account. क्यों दोस्तों? आप शेयर क्यों नहीं करते कुछ? I would like to share a quote. चलिए, सुनाइए. Well, in a day when you don't come across any problem, you can be sure that you are traveling in a wrong path. Whoa. Anybody else? Hello, sir. I would like to share a quote also which inspires me a lot. Whatever you think, that you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. That is absolutely brilliant. Whose quote is this? Swami Vivekananda. Well, it had to be, didn't it? I mean, this is Swami Vivekananda's 150th year. Well, what better person to quote than he? That's absolutely marvelous, my great friends. I was actually getting goosebumps while listening to all you people. क्या वाकई में किसी को जीवन की कठिनाइयों से इतना प्यार हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियाज मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन शो विवेकानंद आंसर्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट जयंत कृपलानी और हमारे साथ हैं दी रिवियर्ड स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट Vadodara, and Dr. Anuttama Banerjee, one of India's renowned psychologists, yani ki manovigyanik. A big hand for them. Folks, now I want to read out some lines which I have pre-marked in this marvelous book of stories from Swami Vivekananda. I have never heard a cow tell a lie. That's how the quote begins. I have never heard a cow tell a lie, but it is only a cow. It is not a man. So never mind these failures. Hold the ideal 1,000 times. And if you fail 1,000 times, make that attempt once more. अब पिछले एपिसोड में हमने अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने कई मुश्किलों के बावजूद भी एवरेस्ट की चढ़ाई की, उनकी कहानी को सुना और हम प्रेरित हुए. और आज के एपिसोड में हम उसी विषय पर और चर्चा करेंगे. समझ में आया दोस्तों? Sorry, it seems you want to ask me a question. Actually, I have a question, ma'am. I have a question for you. That is, whenever we face some difficult situations in the outside world, we can somehow manage to handle that. But if we face emotional turmoil in our life, in our very own life, we break down very easily. So my question goes to you as, how can we handle that emotional turmoils or tumultuous situations, and how to overcome that emotional turmoils, from that emotional turmoil? I would try to give your answer. I'll bring an example for all of us. Let's say when we stand in front of a tall building, very, very close to the tall building, we don't get to see the entire building. We get to see just the few floors. The reason is, when we are emotionally entangled, when we are emotionally very much disturbed, we can't have the end-to-end picture of our problem. So the first thing we have to do when we are emotionally very much disturbed, that we have to emotionally distance ourselves. We have to keep our reasons intact. Maybe at that time we are broken. I would rather say, acknowledge that emotion. Don't deny, cry, break down, but don't think of a solution right then. Think about it after some time when you have gathered yourself better. Try to look at it just like an outsider, as if you are a bystander. Ask yourself, if my friend comes to me with this problem, what would be my suggestion to that friend of mine? Probably then it will be easier for you to handle that difficult situation. Is there any similarity in the philosophy that... Yes, yes. स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ऐसे समय में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. और जैसा मैडम ने बताया, उस समय आत्मनिरीक्षण नहीं होता है. जब हम बहुत इमोशनल होते हैं ना, तो उस समय अपने आप को संभाल लेना चाहिए. उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. यू हैव टू पोस्टपोन योर डिसीजन. और बाद में आत्मनिरीक्षण करके, शांत चित्त से चिंतन करके हमको उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए. और ये आत्मनिरीक्षण में यदि हमारे लिए संभव नहीं होता कभी कभी, तो उसमें हम एक दूसरा सहारा ले सकते हैं. राइट डाउन योर प्रॉब्लम. वो राइट डाउन योर प्रॉब्लम इटसेल्फ will, you may not show to anybody, that will solve your problem, or you will be able to understand your problem. और एक और बात है कि काउंसलिंग. यदि कोई भी आपका एक परिचित व्यक्ति हो जिस पर आपका विश्वास हो, उससे आप अपने मन की बातें कहें, उससे काफ़ी आपको मार्गदर्शन मिलता है. बल्कि ये हो जाता है, हमने कभी भी ऐसा भी हमने देखा है कि उसी से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं 90%.
But what about the other pressure? एक pressure है जो यार मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे साथ सिगरेट पी लो ना, पीयर प्रेशर यार, मर जाते हैं हम लोग पीयर प्रेशर। तो वो कैसे हैंडल कर रही हैं? पीयर प्रेशर का मैं बताता हूँ। आई थिंक यू शुड बेटर, यू आर साइकोलॉजिस्ट। No, before getting into that, I would also just mention, as he very correctly he was talking about, how one girl finally she could not be saved because what her mother had told, and we were also talking about the relationship problems where our, the young generation, they feel कि अगर मेरा एक affair breakup हो गया तो पूरी जिंदगी मेरे लिए खराब हो चुका है, something like that. I have also one question to ourselves, as in the elders of the society or the guardians of the society. That what are we left with in terms of our families? For example, when a child or when a teenager or when a young adult feels that once my boyfriend or girlfriend has left me, I don't have anybody. So what about the fundamental relationships in the family? Why can't they bank upon that? And perhaps there comes the expectation of, aspect, or it's most an instruction-based communication that we get to see between the parents and the children. Have you done this? Haven't you done that? Nothing beyond Instruct and admonish. Absolutely. These are the... So they do not have a cushion to fall back upon when they really face the turmoil of the world. Of course, heartbreaks will be there, but of course there are other people also around. Even peers are around. But peers are not only there to pressurize us, peers are also there to give us shoulder. We miss that. We rather get the pressure component, which is very painful in today's world. A friend in need is a friend indeed. Absolutely. अच्छा, आजकल क्या ये समस्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं peer pressure की और expectations की, आजकल कुछ ज्यादा है? बिकॉज हमारे जमाने में तो ऐसे नहीं, अभी कुछ बड़ी है। अभी कुछ बड़ी है, और इसलिए हम लोग उसको यही कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। So you must be very particular in what type of friendship that you keep. जो आप बता रहे थे ना कि एक बार उसमें चले गए तो भेड़ के झुंड में चले गए तो बस उसके बाद नहीं। स्वामी जी देखिए, एक ये प्रेशर है, चल यार सिगरेट विगरेट पीते हैं, that's obviously taking you. How about the other kind of pressure, which is the good pressure? Hey, come on, let's go and study together, यार. We might be able to help each other. ये होता है आपके स्कूल में? हाँ, कैसे? In my college, actually, in my second year, some of my friends, we just thought of, it was about near to our exam. We just planned for group studies. We don't study alone, actually. Concentrate नहीं कर पाते ज़्यादा पढ़ने पे। वो एक ही लाइन पे आप अटके उड़ते हैं। तो दोस्त लोग के साथ बैठेंगे तो थोड़ा गप्पे भी मार लेंगे, पढ़ाई भी हो जाएगा। That's why we just. और सिगरेट विगरेट पीते हैं तब? Not actually. Not really. तो आप सब लोग ढूंढ निकालते हैं जो अपनी जो डिफिकल्टीज हैं उसको मैनेज आप कर लेते हैं थ्रू डिस्कसिंग विथ हर, थ्रू डिस्कसिंग विथ स्वामी जी, amongst your friends. So you have, what is the word I'm looking for, backup support systems within your community, is it? On that note, I would like to ask a question to ma'am. The question is that, ma'am, if I'm controlling my mind for a good reason, then I'm controlling it for that good reason only. So is there any kind of way? But our mind will always force me to do the bad things, right? So I just want to overcome. I just want to overcome my mind, so that my mind would root me in the right way. Okay. So it's just controlling of that mind. Would you please elaborate on that? Thank you for your question, because I'm sure even some of our other friends will also think in this line. The bad things that you just mentioned, it's actually the temptations. We will be tempted to do a lot of things which we should not do. We know what we should do and what we should not do. Moral is that training we get from our childhood days. But there, I would tell you that when I'm tempted to do something, just hold yourself back. Ask yourself the consequences of your action. Because your life is the consequences of your own choices. So if you know that, okay, if I take this step, if I do this, if I violate this particular regulation or the norm, what is waiting for me? Will I be comfortable with that consequence? For example, if I restrict myself, maybe it will be painful. If I cross my restriction and I do that, maybe that will be unbearable. So it's a choice between something painful and something unbearable, maybe a short-term pain and a long-term pain. So there we can, hold ourselves back by our own rational thinking, because the solution lies right there within you. मैं युवकों को यही बोलता हूँ कि भाई मजा करो, मैं उसमें हरकत नहीं है, पर इस प्रकार से मजा करो कि बाद में सजा ना मिले. As Simple simple as equation. that.
अच्छा स्वामी जी, ही वाज टॉकिंग, वो चर्चा कर रहे थे पावर ऑफ माइंड के बारे में. सो पावर ऑफ माइंड, how can you effectively use that? Yes, Dr. Banerjee gave us a few instances of that. या एक तो पावर ऑफ द माइंड बढ़ेगा, उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा. व्हेन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यू विल हैव ए बेटर परफॉर्मेंस. जब 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी यदि कंसंट्रेशन रहेगा तो. ये तो आपको इंसिडेंट पता होगा, स्वामी विवेकानंद वहाँ पर बैठे थे अपने कमरे में और पढ़ रहे थे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, और वो शरदचंद्र चक्रवर्ती आके बोले कि अरे इसमें तो सारी जिंदगी निकल जाएगी. बोले क्या बात करता है, ये थोड़े दिन पहले आई है, 10 खंड मैंने पूरा कर लिया. इम्पॉसिबल. बोले ठीक है 10 खंड में से पूछ ले प्रश्न, और कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी सबके उत्तर दिए. तब शिष्य ने कहा स्वामी जी ये तो चमत्कार है. स्वामी जी का चमत्कार नहीं है, मन की एकाग्रता का परिणाम. मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है. सो दैट इज नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है. 1 person कैन इंक्रीज द पावर ऑफ माइंड बाई एफर्ट्स, बट उसके लिए वही स्वामी जी ने जो प्रोसेस की, शुद्धिकरण, प्यूरिटी ऑफ माइंड, मेडिटेशन, प्रेयर, दीज आर द वेरियस मेथड्स बाय व्हिच यू कैन मेक द माइंड मोर पावरफुल. Sir, friends, हर दिन हम किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान रहते हैं. एंड समटाइम्स वी फील, यू नो, एज इफ दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान हम ही हैं. Let's take a look at something that we've prepared for you and to see where that is addressed. अरे कंपेयर टू दैट हमारी प्रॉब्लम्स तो इतने माइनर हैं, क्या बताऊं. सलाम करता हूं मैं इन्हें. जिंदगी के असली हीरोज तो यही हैं. दे नो हाउ टू स्माइल आफ्टर ऑल. इन्हें कुछ भी रोक नहीं सकता. हमें सीखना चाहिए कि इनके जैसा बने ताकि हमारी दुनिया और भी बेहतर बन सके. सो यू स्माइल एंड मेक द होल वर्ल्ड स्माइल विथ यू बिकॉज वी बिलीव इन Be and may. एब्सोल्युटली. आइए हम सब आज फिर से शपथ लें और वादा करें अपने आप से कि नो मैटर व्हाट कम्स इन लाइफ वी विल नेवर गिव अप. तो दोस्तों आज बस इतना है. अगले हफ्ते हम वापस आएंगे विवेकानंद आंसर्स के साथ यहीं पर. तब तक अपने पर विश्वास रखें और हंसते रहें और एक और बार हमारे लिए Be and may. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार 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 स्वामी जी, नमस्कार डॉक्टर जी, एंड नमस्कार ऑल यू लवली पीपल. बाय बाय. Swami ji, before we leave, I would request you to please give this as a token of our appreciation to Dr. here, Banerjee here. Thank you. Thank you so much for being with us. Please. सारी शक्ति विवेकानंद की वाणियाँ